Yes, we are live now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. Welcome back to English class once again, 10th standard. So today we're gonna start the fourth poem. As we all are aware that in the previous classes we have completed 3 poems. Previous classes में हमारे 3 poem हुए थे. First it was Pair of Sarah's Crane, Abraham Lincoln's letter to his son's teacher. Third, about Vachana, we have finished in the previous classes. But now today, we are moving for the fourth chapter, one of the most romantic chapter, interesting poem that we're going to start today is about the young and gallant king or warrior, that is knight, you can say him as Lochinvar, which is written by Sir Walter Scott. बहुत शानदार पोएम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Bit interesting, bit enjoying as well. So let's begin. The question is asked, love and courage go together. माने प्यार और हिम्मत दोनों एक साथ चलते हैं. क्या आप इससे एग्री हैं? Yes. If you do not have courage, you cannot love. And if you want to love, you need to have courage as well. क्योंकि बगैर हिम्मत के प्यार नहीं कर सकते, और प्यार करें तो अगर हिम्मत नहीं है तो प्यार कंप्लीट भी नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? इट मे बी अ बॉय एंड गर्ल्स लव, और इट मे बी लव ऑफ फ्रेंड्स. सो देयर वी नीड टू हैव आल्सो करेज. कभी हमारा जो भी फ्रेंड है वो अगर तकलीफ में है या उससे कोई मार रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम में है, तो हम उसको निकालने की हमारे पास उतना करेज तो हमारे पास होना. अगर उन्हें परेशान है तो उसको हिम्मत देने की इतनी करेज तो हमारे अंदर होना. वी नीड टू बी ऑलवेज करेजियस एज वेल व्हेन यू आर इन अ love. And it is easy to love, but it's very, very difficult to get our love back in our life. It's not easy to get the love back in our life. प्यार करना आसान है, प्यार को हासिल करना हजारों गुना मुश्किल है. तो उसी के बारे में एक पोएम लिखी गई है, that is Lochinvar, which is written by Sir Walter Scott. Let's see about it. Okay. Oh, young Lochinvar is come out of the west. एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट? मींस फ्रॉम स्कॉटलैंड. वेस्ट को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, स्कॉटलैंड. ओ यंग लोचिनवर इज कम आउट ऑफ द वेस्ट मींस ओ यंग लोचिनवर, ए नौजवान लोचिनवर हु इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, दैट इज स्कॉटलैंड. थ्रू ऑल द वाइट बॉर्डर. वाइट बॉर्डर माने अ बॉर्डर विच इज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, दोनों बीच जो बॉर्डर है. Through all the white border, his steed was the best. Just steed means horse. His horse was the best one among all the horses. देखिए बहुत कम लोगों के पास मजबूत घोड़े होते हैं. Especially we find the horses best with those people who are riders, who are specially horse riders. और ज्यादातर strong घोड़े सदियों से कहा जाता है कि सऊदी में मिलते हैं, जहां पे पहले ज्यादातर लोग घोड़ों पे सफर करते थे. इसीलिए स्टिल वी फाइंड स्ट्रॉन्गेस्ट और मस्कुलर हॉर्सेस इन सऊदी अरब. सो हिज स्टीड वाज द बेस्ट. इनका जो घोड़ा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा बेस्ट था. एंड सेव हिज गुड ब्रॉड स्वर्ड, ही वेपन्स हैड नन. ब्रॉड स्वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लीजिए बाजू. With only his good broad sword, माने he has only his weapon, माने उनकी खुद की तलवार थी, उसके अलावा कोई और weapons उनके पास नहीं था. He did not have any other weapon except his sword. So he went all alone. He rode all unarmed. Unarmed means without any weapons. And he rode all alone means alonely. See guys, it's not easy to go among many people in the marriage where a bride is going to be the bride of others. माने हम जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी शादी हो रही है कहीं पे, तो वो शादी खाने में हम अकेले घुस जाना इतना आसान नहीं है. बहुत करेज की जरूरत है. कई लोग मिलकर मार सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है. बट Lochinvar did not fear at all. He was very courageous and gallant. So he just came to the function hall for the purpose of getting back his love, that is Ellen. क्या नाम था इसके? हीरोनी का नाम था फेयर एलन. एलन था उसका नाम. फेयर माने गोरी, खूबसूरत एलन. तो अपनी एलन को हासिल करने के लिए he is coming from his country to her country
on the horse by crossing the border between those countries. Okay, he rode all unarmed without any weapon, and he rode all alone. It's not easy to go and fight. It's not easy to go and get something among many people. Really it requires lots of courage. बहुत हिम्मत की जरूरत अगर हमें हासिल करना है. अच्छा, वन मोर थिंग इस पोएम के बारे में, ये भी 4 स्टेंजा इसके हमारे को मेमोराइजेशन में है. मेमोराइजेशन में 4 इसके स्टेंजास पढ़ना है. मेरा मशवरा मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द सजेशन. नो नीड टू गो ऑन रिवाइजिंग दिस लोचिनवर पोएम. जस्ट रिवाइज 2 पॉइजन ट्री एज वेल एज वचना. दोनों में से एक कंफर्म है आपको, क्योंकि टोटल 3 पोएम है मेमोराइजेशन के लिए, जिसमें से 2 एग्जाम में पूछते हैं. कौन सी भी एक आपको लिखना होता है. सो आउट ऑफ दीज 3, लोचिनवर, पॉइजन ट्री एंड वचना, एनी 2 विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. जस्ट रिवाइज 2. दोनों में से एक कंफर्म आ जाती है. वचना तो इजी है, याद हो जाएगी. पॉइजन ट्री भी बहुत इजी है, आप एक बार पढ़े तो यू विल गेट. नाउ विल गो इंशाल्लाह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पोएम देयर. खैर, so he was coming alonely there to the function hall where the marriage was going to take place of his lover, that is Alan. So faithful in love. Faithful means wafadar. So faithful in love and so dauntless in war. Dauntless को अंडरलाइन करके जरा प्लीज आप लोग पेंसिल अपने साथ रखिए, क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आता. समझा? what the poem is about, what the poem is, what the concept of the poem is. जब तक समझ में नहीं आता आप मीनिंग नहीं लिखेंगे, उसके सेंटेंस के माने क्या और नहीं लिखेंगे आप, प्लीज एवरीबॉडी. सो dauntless means fearless in war. So he was very faithful in love and dauntless in war. माने मोहब्बत में वफादार थे और लड़ने में निडर थे उन्होंने. He did not fear from anybody. आज मोहब्बत में दम है, ना लड़ाई झगड़े में दम है. आज मोहब्बत इन्हें अच्छी दिखी तो इन्हें, उन्हें अच्छी दिखी तो उन्हें. सो इट्स नॉट ट्रू लव नाउ. एंड जब लड़ने की बात आती है तो 2 से भी लड़ने डर हो रहा है, आज 10 से लड़ने भी डर हो रहा है. जाकर ऐसा शादी खाने में जाको आना तो बहुत बड़ी बात है. इट्स नॉट इजी. इट वाज नाइट. उन्होंने राजा थे, वॉरियर थे, एंड ही वाज करेज. क्योंकि पहली ही लाइन कही गई है कि लव एंड करेज गो टुगेदर. क्योंकि प्यार जहां है वहां हिम्मत भी होना जरूरी है. विदाउट हैविंग करेज यू कैन नॉट लव. So faithful in love and so dauntless in war. He was very faithful in love as well as he was dauntless in war. अब faithful क्यों word लिया गया सर? As he promised his lover Ellen that he is going to take her away. माने he is only going to marry her. मैं ही तुमसे शादी करूंगा, कोई और तुमसे शादी नहीं करेगा. ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं. तो वो प्रॉमिस को निभाने के लिए he became faithful. और जब वो आसानी से नहीं मिल सकता बोल के he is coming in the to fight against all those people who are marrying Ellen with somebody else. तो इसीलिए उन सबसे लड़ने के वास्ते भी नहीं आ रहा. Getting? And apart from that, he is even fearless. अगर उन्हें डरपोक होता, अगर उन्हें डरता, so it was not possible for him to win Ellen. Have a look. So there never was a night. Night means warrior. Like the young Lochinvar, माने young Lochinvar का सरकार कोई और राजा, कोई और बहादुर, कोई और warrior ऐसा नहीं था. हम सुनते हैं कि 2 लोगों को मार के आना और 10 लोगों में से भाग के आना, दोनों भी बहादुरी का काम है बोलते हैं. क्योंकि ये बेखूफी का काम है. 10 लोग ठहरी मारने, उनको जाको मत मार, तो उनको मारने का तो 2 हाथा पकड़ लेते, 2 पाँव पकड़ ले, 2 मुंडी पकड़ो, फिर डालते हैं मार. समझ आ रहा है? तो देखना, अगर हमारे कॉन्फिडेंस है, वो 10 को मार सकते हैं, देन मूव अहेड. अगर नहीं, जरा भी कहीं भी डरा तो पहले भागना. और भाग पाना है तो बड़ी बात है. इट्स नॉट इजी. पावा नहीं उठते, भाग रहे, स्टेप पीछे पीट लगे तो कोई मारने. गेटिंग? सो दिस इज व्हाट दैट द नाइट वाज वेरी young and very strong, and he was fearless. For that reason, he did not fear from anybody. He just went towards that Nadarbai hall, that function hall where the marriage was about to take place. Now this was about first paragraph, that Lochinvar came from the Scotland by crossing the border. He had good horse, or the best horse. He had no other weapon except his own sword, and he even came to the particular place alone. He was very faithful in love and dauntless, fearless in war. He was very strongest. He was the strongest knight, as the author said or author stated. Okay, now we'll move for the second stanza. अगले stanza की तरफ आइए. He stayed not for break. Stayed means stopped. He stopped not for break, and he stopped not for stone. माने ना ही कहीं, ना ही कोई
ब्रेकर पे रुका उन्हें, माने जहां पे भी रुकने का था ना ही वहां रुका और ना ही बड़े बड़े पत्थर थे वहां पे भी रुका। आप देखिए कई वी हैव सीन मेनी ह्यूज स्टोन्स इन हैदराबाद, हैदराबाद में गोलकुंडा वगैरह कहीं भी जाके देखिए आप, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, तो वहां से भाग लेते जाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही कुछ बड़े बड़े स्टोन्स थे जो बॉर्डर पे से क्रॉस करते हुए लोचिनवर जा रहे थे। So he did not even stop among all those, in front of all those huge stones. He just go on moving without stopping or without taking a pause. बगैर रुके के consistently he was moving towards the place where the marriage was about to take place. That is Nadarbai Hall. So ये भी जरा याद रखिएगा। Lochinvar he stayed not for break, he stopped not for a stone, he swam the Esk River. Esk River where ford there was none. Ford means location where stream is shallow. माने ना ही कोई किनारा था, ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे थोड़ा तीर लेते जा सकते हैं, बल्कि हर जगह पे पूरा डीप वाटर था एस्क रिवर में। और वैसी रिवर के पास भी उन्होंने रुके नहीं, जस्ट गो ऑन क्रॉसिंग थ्रू स्विमिंग, तीरते हुए घोड़े को लेते हुए वहां से उन्होंने निकल गए। बट एर मीन्स बिफोर, he alighted at Nadarbai gate, माने the function hall. What was the name of the function hall? Nadarbai function hall. जैसा हमारे पास ईडन गार्डन, सिटी पैलेस वगैरह ऐसे फंक्शन हॉल होते हैं, वैसे ही सेम फंक्शन हॉल वी फाइंड हियर इन England. So that particular function hall he visited. But ere he alighted माने got down, नीचे उतरना, at another by gate, that function hall where the marriage was about to take place. So the bride had consented, माने जैसा ही दुल्हन उसको देखी, she started giving her agreement, माने consent, permission, that yes, अब मेरा लवर आ गया, my friend has arrived, एक तरह की उसके अंदर खुशी आ गई। She started becoming happy after seeing him. The gallant माने बहादुर, the gallant came late. बहादुर हमारा जो brave है वो थोड़ा लेट आया, बट शादी नहीं हुई थी अभी। For a laggard in love and dastard in war was to wed the fair Ellen of a brave Lochinvar. और laggard माने timid, dastard माने भी covered माने डरपोक, चारों के माने डरपोक क्या होती है, synonymous word है, हो सकता है आपको एग्जाम में एनालॉजी। लगार्ड, टिमिड, कवर्ड, लगार्ड एंड डस्टार्ड, ये चारों के माने डरपोक क्या होती है, देखिए याद रख लीजिए, दीज ऑल आर सिनोनिमस वर्ड, ठीक है। सो दूल्हा जो था शादी कर लेने वाला दुल्हन से, वो कैसा था, ही वाज लगार्ड इन लव माने प्यार में भी डरपोक, एंड डस्टार्ड इन वार मींस लड़ाई में भी डरपोक। समझ में आ रहा है? हु वाज अबाउट टू वेड विद द फेयर एलन, जिसकी एलन के साथ शादी होने वाली थी, जो एलन लोचिनवर की है, बहादुर लोचिनवर की है, ब्रेव लोचिनवर। So in second stanza we read that he did not stop anywhere even though there was breakers as well as some stones. He did not ever stop anywhere, even he swam the river. He just came and alighted माने got down माने उतरना अपने horse पे से, he got down from the horse in front of the function hall, that is Nadarbai function hall where the marriage was about to take place. And when, as soon as the heroine or Ellen saw hero Lochinvar, she had consented, she agreed, she became happy that my lover has arrived, my friend has arrived. And the laggard who was standing aside did not say anything, just kept quiet aside, who was laggard in love and dastard in war, that the bridegroom who was going to marry with Ellen. So who was Ellen? Ellen was the lover of brave Lochinvar or young Lochinvar or gallant Lochinvar or fearless, dauntless Lochinvar. Now we'll move for the third stanza. Third stanza की तरफ आ जाइए। So boldly he entered the Nadarbai Hall. कैसा आ गए भैया, खाली ऐसा अकड़ के। He is entering very boldly. माने कोई डर को नहीं, हाँ क्या कोई तो क्या तो मारेंगे मेरे को, कोई कुछ नहीं कर सकता, जब हिम्मत मेरे साथ है तो कोई नजदीक नहीं आ सकता। In such a way he was very confident. So
he entered very boldly into the functional. इतना आसान नहीं है. It's very very difficult to enter in a place where complete gathering was our enemy. जब जितने भी जमा लोग पूरे हमारे दुश्मन है, वैसी जगह पे ज्वाइन हो जाना इतना आसान नहीं है. It was very difficult task, but प्यार और हिम्मत जब दोनों एक साथ हो तो कहां भी जा सकते हैं. So boldly he entered Natherby Hall. Natherby Hall was located in England. It was in England. हम एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछता हूं मैं आपको. Natherby Hall की क्वेश्चन आती है, how was bridegroom described? bridegroom को कैसा बताया गया है? समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर मैं पूछूंगा आप लोगों ने. जरा देखिए, who was Lochinvar? Lochinvar the knight of Scotland. Why did he write to Natherby Hall? First question, he just wrote to Natherby Hall for the purpose of getting his Ellen back, who was about to marry with someone else. समझ में आ रहा है? इस तरह से जो क्वेश्चन है बैक साइड के, what qualities of bridegroom are listed in second stanza? That the bridegroom was laggard in love and dastard in war. इस तरह से आपको आंसर लिखना है. That I'll be giving questions after completion of this poem. Okay. So let's come to the third stanza. So boldly he entered the Natherby Hall among bridesmen and kinsmen means close relatives. Underline करके लिख लीजिए, close relatives and brothers and all. So he entered into the function hall where the bride was surrounded by the close relatives as well as her cousin, brothers, chichore, momere, taere, khalere, सब भाइयां तरफ से सब लोग थे वहाँ function hall में. As we all know, in a marriage, each and every family members comes there. So then spoke the bride's father. दुल्हन के पापा सामने आ गए. क्यों वहीं यहाँ? Because he was aware that Lochinvar loves her daughter. For that reason, he suddenly came in front of him. Him refers to Lochinvar के सामने आ गए and asked him. His hand on sword. Exam में सवाल आता है. How did bride's father receive Lochinvar? कैसा receive करे? So bride's father received Lochinvar by keeping his hand on sword, and he asked the question, "Oh ye come in peace" or "Oh ye come in war." माने यहाँ दे रहा देखिए, poor craven माने जो डरपोक, जो गरीब ग्रूम था, जो दूल्हा था. cowardly माने डरपोक. craven means cowardly, डरपोकी. bridegroom माने दूल्हा. said never a word. जब उसकी दुल्हन के सामने उसका एक दूल्हा ठहरे और उसकी दुल्हन के वास्ते उसका लवर सामने से आ रहा है, तो इन्हें पकड़ो. सामने आता मारने उसको पड़ा. क्या ठहर को देखता, जान दे भाई, क्या तो भी करन दे, मैं चुप ठहर तू. तो दुल्हन के पापा जब सामने आते हैं तो उनका हाथ पहले तलवार के ऊपर जाता है और पूछते हैं कि ओ कम ये, माने कम ये रेफर्स टू यू. ओ कम यू इन पीस हियर. क्या आप अमन शांति के लिए यहाँ पर आए हैं? Have you come here just for the purpose of dancing in my daughter's marriage? Have you come here to create peace? Or come ye means you in war? Or are you coming here just to fight with us? To take away Alan? Tell me first. बताओ हमें, क्या आप अमन शांति के लिए आए हैं, क्या लड़ने आए? हम दोनों के लिए तैयार है. As soon as the bride's father said this, or to dance at the bridal माने wedding. Bridal means wedding. क्या आप शादी में नाचने के वास्ते आए हैं? बोलिए यंग लोचिनवर, बताइए. The third stanza was about that he entered very boldly into the function hall where the bride was covered or bride was surrounded by her relatives as well as her brothers, and suddenly bride's father came in front of Lochinvar and asked him, "Oh, you come in peace or oh, you come in war? Whether you have come in peace to create peace or for the purpose of war. Tell me, my young Lochinvar, or you have come to dance in our in our daughter's wedding." So what did Lochinvar reply? Have a look after listening these words. तो जब उनके पापा रोक कर जब पूछे कि भाई तुम कहीं क्या आस्ते हैं, तुम लड़ने आई क्या, अमन शांति के आस्ते हैं, क्या नाच के बिरयानी खा के जाके नहीं? Come on, tell me. तो लोचिनवर का जवाब सुनिए. I long loved, wooed माने loved, L-O-V-E-D लिख लीजिए. I long loved your daughter, my suit you denied. Suit means proposal, marriage proposal, or my suit means my marriage proposal you rejected. Denied means rejected. मैं आपके बेटी से बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं शादी का रिश्ता भी भिजाया, even if you rejected it.
लव स्वेल्स लाइक सॉल्वे, और मेरा प्यार बेइंतहा बढ़ गया, सॉल्वे रिवर के जैसा बढ़ गया। सर सॉल्वे रिवर क्या है? अंडरलाइन करके सॉल्वे रिवर को नीचे एरो मार्क लेके लिखिए। अ रिवर दैट सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऐसी रिवर जो इंग्लैंड को स्कॉटलैंड से सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वे। तो मेरा अब वो रिवर क्यों इतना प्यार बढ़ गया? जब मेरा प्यार नहीं, नॉर्मल सी बात है, whenever you ask something to our parents and our parent does not give us, our parents do not give us something, so we always go on demanding it again and again। जो चीज हमको नहीं मिलती हम बार बार उसके होने की ख्वाहिश करते हैं। तो when you said me, when you rejected my marriage proposal, so my love increased like a Solway river। but ebbs माने आपके जो पानी की नहर होती है ना, वेव्स, उसे कहेंगे ebbs like its tides। ebbs माने फ्लड बोल सकते हैं, और टाइड माने वेव। और अब जो है वो पानी के नहर के जैसी हो गई, बारीक पूरा बढ़ गई थी और अब वो कम हो गई। why it has become less or why it has become tight in spite of a river? Because now my lover, my bride is going to my lover Ellen is going to marry with somebody else, for that reason my love has reduced। तो इस लाइन के माने क्या होते हैं देखिए, लव स्वेल्स लाइक सॉल्वे बट एब्स लाइक इट्स टाइड। एग्जाम में पूछता व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? तो इसका आंसर ये है दैट ही डीपली लव्ड एलन एंड ही इज डिप्रेस्ड बिकॉज़ शी मैरीज अनदर वन। माने इन्हें बेइंतहा प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, मगर अब उन्हें किसी और से शादी कर रही है। दिस इज बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर line। Now third line, and now am I come with the lost love of mine, और अब मेरे मैं खोए प्यार के आस्ते I have come for the lost love of mine, to lead माने to dance, but one measure, drink one cup of wine। I just came here to just have a cup of wine from your daughter's hand, to have some dance, later on I'll move out। तो मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, सिर्फ थोड़ा डांस करूंगा आपकी बेटी के साथ, थोड़ी देर उसके हाथ से जाम पीऊंगा, उसके बाद मैं शाम निकल जाऊंगा। देयर आर मेडन्स मेडन्स, देखिए मेडन्स के दो तीन माने, एक नॉर्मल माने मेडन्स के होते हैं कि अनमैरिड गर्ल्स भी हो सकती हैं, और मेडन्स के माने होते हैं कि अनमैरिड सर्वेंट्स को भी बोलते हैं, मेड्स को भी बोलते हैं, जिन्हें अच्छे इंग्लिश के अच्छे वर्ड में बोलेंगे अनमैरिड गर्ल्स के लिए स्पिंस्टर। कई बार ऐसा होता है कि किसी को पूछें, एक लड़की, मैं खुद देखा मेरे हाथों से, मेरे आंखों के सामने, एक टीचर को एक सर पूछ रहे थे कि आर यू बैचलर, आर यू बैचलर पूछ रहे थे उन्हें। कभी भी याद रखिएगा, खैर आर यू तो बिटा देंगे, क्वेश्चन है, तो बैचलर कभी भी याद रखिएगा, बैचलर इज यूज्ड फॉर मेल्स। बैचलर जो वर्ड है वो मेल्स के लिए आता है, जो लड़कियां होते हैं। अनमैरिड जो वर्ड है ये कॉमनली आप आर यू अनमैरिड बोल के आप फीमेल या मेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आप नहीं बोलते हैं सर स्टैंडर्ड वर्ड हमारे को होना है, तो यू कैन गो फॉर स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे? फीमेल के लिए, ओनली फॉर फीमेल, फीमेल के लिए आप स्पिंस्टर वर्ड यूज कर सकते हैं। न्यू वर्ड एंड विद स्टैंडर्ड वर्ड यू कैन यूज फॉर फीमेल्स ऑफ अनमैरिड। ओके, अनमैरिड फीमेल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर मेडन्स माने मेनी स्पिंस्टर्स, कई अनमैरिड लड़कियां इन स्कॉटलैंड आर मोर लवली बाय फार, आपकी नेटली बेटी से भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। माने यू आर माय, देयर आर मेनी मेडन्स हु आर मोर लवली देन योर डॉटर that would gladly माने happily be bride of young Lochinvar। अरे तुम्हारे बेटी की लिख जाने समझ रही है। You think that I came here to take away your daughter? No, I did not। You cannot imagine that there are many beautiful girls who are more beautiful than your daughter, who are ready to become my bride। Getting? I just came to have a dance and a cup of wine। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि एक वाइन पी लूं और डांस कर लेके चलेंगे उधर, हम इधर। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट अदर लाइज डिड लोचिनवर गिव या टेल, क्या झूठ बोला लोचिनवर, या व्हाई डिड लोचिनवर लाई? ही जस्ट लाइड फॉर द पर्पस ऑफ बी फूलिंग ब्राइड्स फादर, ब्राइड के दुल्हन के
ये एलन के पापा को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने झूठ कहा कि मेरे लिए वहां कई लड़कियां जो मेरे दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। So in fourth stanza, he said that I loved your daughter since a long time, and when I sent my marriage proposal, you rejected that, due to which my love increased a lot, but now it has reduced because my Ellen is going to marry with someone else, and now I have come with a lost love of mine, and just to have a dance with my lover and have a cup of wine. Later, I will move out from your functional because there are many beautiful girls in my country, that is Scotland, who are more beautiful than your daughter and who are ready to become happily my wife. So I don't need your daughter. This was about fourth stanza. And let's move for the fifth stanza. Fifth stanza की तरफ आ जाइए. The bride kissed. Bride, when she listened everything, the discussion between her father and Lochinvar, थोड़ा नर्वस होती है उन्हें. मैं समझी मेरे को ले जाने इनो इनके गांव में, इनके कंट्री में दुनिया खूबसूरत है, कहते मेरे से भी ज्यादा, चुप मेरे साथ डांस करो चले जाती, कहते मैं कितना मोहब्बत करती हूँ इनको. She was a bit upset by listening the discussion. So she took a goblet, माने a glass of wine. Goblet means glass of wine. अंडरलाइन करके लिख लीजिए. The bride kissed the goblet of wine, माने the glass of wine. उसको भर लेकर किस देकर, the knight took it up, उसको दी, and he took it, I squaffed. Squaffed means drank quickly, तेजी से पी लेना, of the wine, and threw down the cup, और कप को नीचे फेंक दिया. As soon as Lochinvar kissed and gave the glass of wine to Lochinvar, he drank and he threw the particular glass and broke it into pieces. She looked down to blush. नीचे फेरी बेचारे नीचे मुंडी कर कर. Blush means makeup, and she looked up to sigh. और ऊपर मुंडी कर कर एक सांस लेती है. Sigh means a deep breath to express sadness. लिख लीजिए माने looked up to sigh, अंडरलाइन करके लिख लीजिए बाजू. A deep breath to express the sadness. माने थोड़ा अफसोस था, that I thought that he has come to take away me from this functional and he will marry me, but it's quite different that he has just come to have dance with me and he is about to move after dancing with me. थोड़ा अफसोस होता है उसे. With a smile on her lips and a tear in her eye. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what does the line smile on her lips and tear on her eyes express? इस लाइन से क्या मालूम होता है? आंखों में पानी, चेहरे पे मुस्कान, तो आखिर मतलब क्या है? This shows that Ellen loves more to Lochinvar, माने एलन लोचिनवर से बहुत ज्यादा प्यार करती है. This shows that love of Ellen for Lochinvar. उसकी आंखों में जो आंसू हैं वो उसे देखकर आए हैं, खुशी के आंसू हैं, चेहरे पे मुस्कान है कि उन्हें यहाँ से ले जाएगा, ये एक उम्मीद है. So let's see what happens. He took the soft hand, और उसका हाथ पकड़ता है soft hand, पकड़ के उसको अपने करीब खींचता है. Soft hand, R means before her mother could bar means stop. Before her mother could stop her, he took her. Bar means prohibit or stop. Now treat माने go along with. लिख लीजिए अंडरलाइन करके. Now treat, go along with, we a measure, say young Lochinvar. ऐसा खींच के उसको अपने करीब पकड़ के उसके साथ में डांस स्टार्ट कर दिया और दूर दूर तक डांस करते जाना चालू कर दिए. So in fifth stanza we came to know that as soon as Ellen listened that Lochinvar want to have a cup of wine which should be by my hand, and he will, after that he will dance with me and he'll move away. So suddenly she went towards the drinks and she took a glass of wine and kissed it and handed it over to the Lochinvar. As soon as he took it, he squaffed, man, he drank very quickly and threw the particular glass down on the earth, and later he took her hand and started dancing with her, when there was a smile on her face and a tear on her eyes. So they started dancing. Now we'll move for the next stanza, that is stanza number 6. So stately, so boldly. समझ में आ रहा है?
या हैविंग रॉयल क्वालिटीज, हिज फॉर्म माने स्लोप, एंड सो लवली हर फेस। तो एक बहुत स्टैंडर्ड तरीके से दोनों डांस करना चालू कर दिए। दैट नेवर अ हॉल सच अ गैलियर्ड, गैलियर्ड मींस डांस, डिड ग्रेस, माने नेवर बिफोर सच अ ब्यूटीफुल डांस हैड एवर टेकन, माने इससे पहले कभी कोई दूल्हा दुल्हन उतना शानदार अंदाज में वो फंक्शन हॉल में नहीं नाचे थे। That never such a galliard did grace, while her mother did fret. Fret means anxious. माँ उनके जरा बेचैन थे, हैबत हो रही थी, क्या होता है कि लड़ाई होती है, क्या होता है कि बच्ची को लिख जाता क्या है कि नहीं। She was bit anxious. And father did fume. Fume means angry. पापा आखिरी गुस्से में थे, थोड़ी देर में जाता बोला था, अभी तक नहीं जा रहा, डांस कर रहा मेरे बच्ची सब। He is bit angry. She is bit nervous. एलन नर्वस है, उनके माँ बेचैन है, एंग्शियस है, whereas Alan's father was bit angry against Lochinvar. And the bridesmaidens माने उनके जो सर्वेंट्स या उनके बहना, ऐसा बताया इसमें तो कि कजन्स दिया गया है, ठीक है। तो bridesmaidens servants whispered माने said slowly, swear better by far माने how better it would be, swear better by far बोल तो how better, how good it would be to have matched our fair cousin with young Lochinvar। कितना अच्छा होता अगर हमारी बहन हमारी जो खलेरी मुमेरी जो भी बहन हमारी कजन सिस्टर एलन, कितना अच्छा होता कजन हमारी एलन जो है लोचिनवर से शादी होती, उसकी कितनी अच्छी दोनों की जोड़ी हो रही है, कितना अच्छा दोनों मैच हो रहे हैं, काश इन दोनों की शादी होती। इस तरह से बोल रहे थे, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देखिए आपको ये what was the impression of the bridesmaiden about the pair of young Lochinvar and Ellen, that they said that it is far better that if it would be possible that Ellen could marry young Lochinvar because they are very beautiful pair. So in 6th stanza, we come to know that he started dancing with her so lovely, and such kind of dance has never taken place in the function hall. Whereas her mother was, her means Ellen's mother was a bit anxious, whereas father was very angry. As soon as they started dancing, the bridegrooms stood dangling. Dangling means hanging. दूल्हा जो है रुक गया था वहीं, देख लेते। His bonnet माने हैट पकड़कर, and pilum माने a feathers ornament माने कोने में ठहरे हुआ है, दुल्हन नाच रही है दूसरे के साथ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डरपोक है। Because as he has already been described by the author, by the poet in the beginning, that he was laggard in love and a dastard in war माने लड़ने में भी डरपोक और प्यार करने में भी डरपोक। ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया, इसीलिए उन्हें साइड में ठहरे हुआ है। But as soon as they are going on dancing, so the cousins of Ellen started saying that it would be very much better if our sister Ellen would marry with the young Lochinvar. How beautiful the pair is. उन लोगों का तारीफ करना चालू कर दिए। Let's move for the para number 7. One touch to her hand and one word in her ear माने ऐसा हाथ पकड़कर उससे और करीब करे और उसके कान में कुछ बोलते हैं लोचिनवर। When they reach the hall door and the charger माने horse, अंडरलाइन कर लीजिए। What was the horse described in line number 38? आ सकता है क्वेश्चन आपको या इन द 7th stanza भी क्वेश्चन आ सकता है। So a charger means horse stood near. So नो खरीब लेकर कान में बोले, दीवानी तेरे को ले जाने चाहिए, टेंशन न ले, I just came here to take you with me, not to worry. So they started dancing. They dance करते करते कहाँ पे पहुंचे? They reached the hall door. उस फंक्शन हॉल के डोर तक चले गए और उस डोर के बाहर कौन ठहरे हुए थे? There was the charger of Lochinvar माने लोचिनवर का घोड़ा जो है वहीं पर ठहरा हुआ था। So light to the croup. Croup माने top of the horse. दुल्हन को उठाकर घोड़े पे बिठा लिए। Fair lady, he swung माने फिक्स कर दिया ऊपर। So light to the saddle, और वो भी वो सैडल माने जो पैर रखने का रहता घोड़े का, वहां पैर रखकर he too sprung माने उन्होंने भी ऊपर चढ़ गए घोड़े के। She is won, और उन्हें हासिल कर लिया गया। We are gone over bank bush माने uncultivated area, and square माने rocky areas. Square means rocky areas. So he took her and sat her on the horse, and he too sat behind her, and they started
riding over it, and they started running. Whereas he has won the he has won the fair Ellen. There will have fleet. Fleet means group of people. Underline collision. Group of people. Fleet means steeds. Means horses. Kai ghode piche. That follow. Said means quote. So quote bole to sorry said. Young Lochinvar. Lochinvar started saying that many horses are following us. Many your relatives are being coming, or they are following us. As soon as we are reached, as soon as we have moved from function hall, they all are following us. So in stanza number 7, what we have learned about that when touched to her hand, meaning he took her bit near and said in her ear that I have just come for the purpose of only taking you with me. So not to worry, don't cry that I'm going to take you from this function hall and will marry there. So let's move till the door of the function hall. There our horse is standing. जहाँ हमारा घोड़ा ठहरा है वहां से हम निकल जाएंगे. So lie to the crew. Man, he just fixed her over the horse and he too sat and he took her away. So she was won by Lochinvar, and other her relatives started following her on their different horses. Okay, so here the stanza number 7 ends. Now we'll move for the stanza number 8, that is last one. There were mounting means पहाड़ों पे चढ़ना. Monks माने a crowd. Grams माने less common people, आम लोग. कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे किसी को अगर मारने कोई चोर पकड़ा गया, समझिए मिसाल के तौर पर मेरी कोई चीज चोरी करके जा रहा चोर और वो चोर पकड़ा गया, तो चोर को मैं भी मारता हूँ और आतराफ के लोग भी आको हाथा सेक लेते हैं, जरा उन लोग का ही मार लेते हैं. तो वैसे ही जब दुल्हन को लेकर भाग रहा था लोचिनवर, तो उस वक्त उनके रिलेटिव भी पीछे लगे रहे थे और कुछ दूसरे कॉमन लोग भी उनका पीछा कर रहे थे. There was some common people who were also following them. Fosters, Fenwicks and Musgraves, they were the different families of Ellen. They rode and they ran. भागते गए, भगाते गए घोड़े को पीछे. There was racing and chasing on Canterbury. Canterbury means a park in England. So there was continuous racing of Lochinvar behind all the Ellen's horses. But the lost bride of Natherby never did they see. Never means near का never. माने ऐसा भगाया लोचिनवर अपने घोड़े को कि दूर दूर तक लोचिनवर इन लोगों को नजर ही नहीं आया. But the lost bride of Natherby never did they see. So daring in love and so dauntless in war. Have you ever heard of gallant? Have ye means you, er means ever. Heard of gallant means brave soldier like young Lochinvar. क्या आप कभी ऐसे खतरनाक young Lochinvar को कहीं देखे हैं? समझ में आ रहा है? So the last stanza gives us the information about the story that so they started going on upside the mountains, as well as many families were following them like Fosters, Fenwicks and Musgraves. And different families of Ellen were following Lochinvar behind their horse, on their horses. And there was even racing and chasing on Canterbury, means in the park of England. So bride, as fast as possible, the Lochinvar took the horse so that they were unable to be seen by the followers, the different families of Allen's. So they just move on. So daring was Lochinvar, and he was also dauntless in, so fearless in war. Have you ever heard such kind of a galliard, such kind of a hero who took away heroine from among those people from such a function hall? बहुत से तो फंक्शन हॉल में से इतने लोगों के बीच में से कोई दुल्हन को भागे से आज तक हम सुने कभी नहीं सुने और आगे सुन भी नहीं सकते. It's not possible. बहुत मारा खा खाना पड़ता है. So why was she crying? Because she was to wed someone else. माने जो रो रहे थे उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उन्होंने क्यों रो रहे थे? Because she was about to marry somebody else. Okay. Alhamdulillah. So here our poem number 4 finishes.